नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर IIT JEE and NEET. This is the ninth day of JEE Mains revision and today I am going to discuss about chemical kinetics. So chemical kinetics is divided into two parts, part 1 and part 2. Today we are going to discuss about part 1. जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1। So we are starting with methods to represent the rate of reaction. So this is a balanced reaction in which all the reactants and all the products are in gaseous state. If I write what is the rate of reaction, so this way of representation is known as relative rate, right? So rate of reaction is equal to minus times change in concentration of A with respect to time divided by stoichiometric coefficient 3, which is equal to, I can also write the rate of reaction in terms of change in concentration of B, which is product. So I can write that plus sign is indicating that the change in concentration of B is increasing with time. So this is rate of change of concentration of B with time divided by stoichiometric coefficient 2. And similarly, we can write in terms of C, which is equal to change in concentration of C with respect to time. So this is the usual way of writing the rate of reaction, but we should know that this way of writing rate of reaction will be valid only when the volume of the system is not going to change with time and the volume is constant. So here if volume is constant, concentration, we can write that number change in number of moles of A, and concentration is number of moles of A upon volume. Volume of system is constant, so we can put it outside. So I can write rate of reaction is minus times the change in number of moles of A with respect to time divided by 3, which is a stoichiometric coefficient, divided by volume of the system, which can also be equal to change in number of moles of B with respect to time divided by stoichiometric coefficient 2 divided by volume of the system, or we can write that change in number of moles of C with respect to time divided by volume of the system. Now, number of moles can be written as mass upon molar mass, and the molar mass of A, B, and C is not going to change. So that's why we can write that rate of reaction is equal to minus times of 1 upon 3 into volume of the system into molar mass of A into change in mass of A with respect to time. Similarly, in terms of B, we can say that 1 upon 2 times of volume of system, molar mass of B, change in mass of B with respect to time, which is equal to 1 upon volume of system, molar mass of C, change in mass of C with respect to time. So this is important because here we are writing the rate of reaction in terms of change in mass per unit time, right? Most of the time when we are representing the rate of reaction, we are representing the rate of the reaction in the first form. But this form is also important for us. In JEE Advanced, they have asked question based on this form. We know that if the gases used in a chemical reaction is ideal gas, we can write that partial pressure of gas is equal to concentration of that gas into RT. Similarly, we can write partial pressure of gas B and partial pressure of gas C. So I can write that rate of reaction is equal to change in concentration of A. If I differentiate both sides, I can write that change in concentration of A with respect to time is change in pressure of A with respect to time divided by RT. So in the first equation, in place of change in concentration of A with respect to time, if I write in terms of pressure, it will give like this. So we can write that rate of reaction is equal to minus times of 1 upon stoichiometric coefficient divided by RT, rate of change of pressure of A with respect to time. Since pressure of A is decreasing with time, right? So dPA upon dt is negative and minus sign is to make the whole thing positive because rate of reaction is always positive. So same way we can write for product 1 upon stoichiometric coefficient 2 into RT, rate of change of pressure of B with respect to time, and same way we can write for C, which is product 1 upon RT, change in pressure of C with respect to time. So these are the way to represent the rate of a chemical reaction. Most of the time while representing the rate of a chemical reaction, we are using this method.
Now, this method is valid when the volume of the system is constant. If the volume of the system is not constant, then we should not write the rate of reaction in terms of concentration. Then at that time, we have to write the rate of reaction in terms of change in number of moles per unit time. Volume of the system will not come in that case. So we have an example. This example was asked in JEE Advanced. So let me read the question first and then we'll try to solve it. The given reaction is taking place at constant volume and temperature. If the rate of reaction of ammonia, if the rate of formation of ammonia is 10 to the power minus 3 kg per hour, then calculate the rate of consumption of hydrogen gas in kg per hour under the same conditions. So here they have given the rate of consumption. They have given the rate of consumption of and rate of, they have given the rate of formation of ammonia, that is 10 to the power minus 3 kg per hour, and they are asking about the rate of consumption of hydrogen in kg per hour. So most of the time 99% questions are based on we are writing rate of reaction in terms of change in concentration. So this question is already from JEE Advanced. Long back they have asked this concept and it's very common for JEE Mains, right? So be careful when you're writing in terms of mass per unit time. So when I am writing the rate of this reaction, I can write that the rate of the reaction is equal to rate of reaction with respect to nitrogen divided by stoichiometric coefficient, rate of reaction with respect to hydrogen divided by stoichiometric coefficient, rate of reaction with respect to ammonia divided by stoichiometric coefficient. Since here they are talking about these two chemical species, so we are not interested in ammonia. Since here they are talking about two chemical species, one is ammonia and the other is hydrogen, so we are not interested in nitrogen, right? So we are interested in hydrogen and ammonia. So when we are discussing, we can say that the rate of reaction with respect to hydrogen is equal to 3/2 times the rate of reaction with respect to ammonia. Now, when we are writing the rate of reaction here, and we can write that rate of reaction in terms of mass, right? So when we are writing this value, be careful about rate of reaction in terms of mass. When we are writing, we should write that H2 is reactant, so minus times of change in concentration of mass of hydrogen with respect to time divided by molar mass of hydrogen divided by volume of the system. So change in mass divided by molar mass is change in number of moles divided by volume is change in concentration. And so this is 3/2 times of change in mass of ammonia. Ammonia is going to increase with time, with respect to time. And then we should write volume of the system and molar mass of ammonia. So be careful about, since volume will cancel out, it is not that important, but molar mass is important, right? So here, most of the time when we are writing rate in terms of concentration, we can directly write 3/2 into rate of formation of ammonia. From there we get, but here the rate of formation of ammonia in terms of mass changing per unit time. So molar mass is also important. So when we write that, what is the rate of change of mass of hydrogen gas with respect to time? So that is equal to 3/2 times of molar mass of hydrogen is 2, molar mass of ammonia is 17 into change in concentration, change in mass of ammonia per unit time, which is given, which is equal to 10 to the power minus 3. So if I simplify this 2 and 2 will cancel out. So we can write that this is 3/17 into 10 to the power minus 3. If we multiply and divide by 10, we can write that this is 30 divided by 17 into 10 to the power minus 4. So on simplification, we'll get this answer. So there is a common error done by the student, because most of the time when we are solving the question, we have an habit of writing the rate of reaction in terms of concentration. So whenever it is in terms of change in mass per unit time, don't forget about the molar mass of the reactant or molar mass of the chemical species about which they are asking, right? There is another reaction. There is another example. We are going to discuss example number 2. So let me discuss this question first.
Let me read the question first. So N2O5 in gaseous state is converted into 2 times of NO2 in gaseous state plus half of O2 in gaseous state. For the first order reaction, find the value of rate constant with respect to N2O5 is to rate constant of reaction with respect to NO2 with is to rate constant of the reaction with respect to O2. So be careful while solving the question that is it a rate constant of the reaction or is it the rate constant of some reactant or product. So while solving question, be careful about that. When we are writing relative rate for this reaction, I can write that rate of this reaction is equal to, I am writing relative rate. So rate of reaction is equal to rate of reaction with respect to N2O5 divided by 1 is equal to rate of reaction with respect to NO2 divided by 2 is equal to rate of reaction with respect to O2 divided by half. Same way, when we are writing rate of reaction is equal to rate constant of reaction into concentration of reactant. Reactant is N2O5 to the power order. They have given that. Okay, so they have not first order reaction they have mentioned here. So reaction is first order. Same way, when I am writing that what is the rate of reaction with respect to N2O5. So here I have to write rate constant with respect to N2O5 into concentration of reactant N2O5 raised to the power order. And here, when we are writing rate of reaction with respect to NO2, we should write rate constant of NO2 into concentration of reactant raised to the power order. And we can write rate constant of O2 concentration of reactant raised to the power order. With here we have to divide by stoichiometric coefficient 2 and here we have to divide by half, right? So we are writing the value of rate of reaction with respect to N2O5, rate of reaction with respect to NO2, rate of reaction with respect to O2, and this is rate of reaction. Rate of reaction is rate constant of reaction, concentration of reactant raised to the power order. So here you can see that N2O5 is common, so that will cancel out everywhere. So we get the relation, and the relation is similar to that what we are writing for rate of reaction. So what we are getting, that rate constant of reaction is equal to rate constant of reaction with respect to N2O5 divided by stoichiometric coefficient, rate constant of reaction with respect to NO2 divided by stoichiometric coefficient, rate constant of reaction with respect to O2 divided by stoichiometric coefficient. So if I simplify here, that this value, suppose if I want to write this value in terms of rate constant of reaction and then we want to write what is the answer. So on simplification, I can say that rate constant of N2O5 is to rate constant of NO2 is to rate constant of O2 is equal to K reaction is to 2 times of K reaction is to half times of K reaction. So on simplification, this K reaction will cancel out. This is to, this is also is to. So this K reaction will cancel out. So we can say that the answer will be 1 is to 2 is to half, or we can write that this is 2 is to 4 is to 1. So this will be the answer. Very common question, but you should not confuse. As you are writing, be careful that when they are using rate of reaction, rate constant of reaction, or rate constant and the name of chemical species there, right? So this is very simple, very common in JEE mains and Ncert also, right? They have used these type of examples, very simple problem, but you should not do mistake in these type of things. Now, comparison between order and molecularity of a chemical reaction. So when we do comparison between order and molecularity, first we are going to discuss about order and then we are going to discuss about molecularity. So one by one we are going to handle this. So let us start with discussion of order. So this is a balanced reaction. This is a balanced reaction. Small a, capital A in gaseous state plus small b, capital B in gaseous will form the product. The rate of reaction is experimentally determined, yes.
and differential rate law equation. So for this reaction, if we write that what is differential rate law equation, that is rate of reaction is equal to rate constant of the reaction concentration of reactant raised to the power their order. This x and y is experimentally determined. We cannot put the value of a and b over here, right? So x and y is, x is order of reaction with respect to a, and y is order of reaction with respect to b, and x plus y is overall order of the reaction. So order is defined as the sum of power of concentration terms of chemical species present in the rate law equation. This is rate law equation. This is rate law equation, and this rate law equation is experimentally determined. So it is not necessary always that in rate law equation concentration term, it is not necessary always that that will be reactant. Sometimes it may possible that product will come, or sometimes it may possible that some catalyst will come. That's why while writing or while defining order of reaction, we are saying that it is defined as sum of power of concentration terms of chemical species present in rate law equation. So it generally, if we say, most of the time reactant will come, but it is not necessary that in rate law equation always reactant will be there. For some complex reaction, product can come. For some complex reaction, if catalyst there, catalyst can come, right? So when we are writing here, it is sum of power. Here the power of this concentration term is x, here the power of this concentration term is y. So we are saying overall order is x plus y. So you'll come to know that there are many chemical reactions for which we cannot write the differential equation in this form. So there are many reactions for which order is not defined, order is meaningless. We can define order only when we are able to write the rate law equation in this form. So since rate law is always experimentally determined, therefore the value of x and y are also experimentally determined. Order will tell the effect of change in concentration of rate of reaction. Yes, we should have a feeling that what is the meaning of order. Like suppose if I am saying that a to the power 1, right? So x is 1. So we can say that order of reaction with respect to a is 1. So if I double the concentration of a, the rate of reaction will double. So if it is first order reaction, on changing concentration of reactant, the rate of reaction will be affected. On doubling the concentration of a, rate of reaction will double. If it is zero order reaction, then on changing the concentration of a, there is no effect on rate of reaction. So rate of reaction will tell you that how the rate of reaction, the order will tell you that how the rate of reaction will change on changing the concentration of the chemical species present in rate law equation. So this is here. Order will tell the effect of change in concentration on the rate of reaction. If reaction is zero order with respect to A, it means that there is no change in the rate of reaction on changing the concentration of A. We have discussed this, right? Order can be positive, can be negative, can be zero, or it can be fraction. So order can have different kind of things, like it may be integer, it may be negative integer, positive integer, it can be fraction, negative, positive, zero, right? So many things are possible, and this is experimentally determined. There are many reactions for which order cannot be defined. For example, this is the reaction from experiment. We got that this is the differential rate law equation. Now this differential rate law equation, we cannot define what is the order of the reaction, because whenever we are writing that what is the order of the reaction, the rate law must be in this form. Rate of reaction is equal to rate constant of reaction, concentration of a to the power x, concentration of b to the power y. If this is in this form, then we'll say order is x plus y, or order with respect to A is x, order with respect to B is y. But here, this is complex reaction. We cannot define what is the order of the reaction. So there are many reactions for which order is meaningless. It is experimentally observed that reactions with order greater than equal to 3 are very rare, right? So this is experimental observation that reaction with order greater than equal to 3 are very rare. Let us discuss about molecularity. So it is, this molecularity is theory, but that theory is based on some experiment. You are not going to
follow a theory which do not have any experimental proof. So it is a theory, but keep in mind that it has experimental proof. So it's related to collision theory based on mechanism. There are two types of chemical reactions. So single step reactions and multiple step reactions. So let us start with single step reaction. So this reaction is single step, can be determined by experiment, right? So if we know that from experiment this is a single step reaction, how we don't know that this is a single step reaction? We are going to learn here that from experiment how do we know that it is single step. But when we are saying it is a single step reaction, then we'll find what is the coefficient of reactant in the balance reaction in order to get the molecularity of the reaction. So here the coefficient of reactant in the balance reaction is equal to 1. So we are saying molecularity is equal to 1. So according to collision theory, if I explain this point, it means that PCl5 molecules are there and they are colliding with the wall of container. When these molecules are colliding with the wall of container, they have converted into, on collision, they have converted into two different particles, right? So one particle will be PCl3 and the other particle will be Cl2. So initially this was PCl5 molecule. On colliding with the wall of container, it has converted into PCl3 and Cl2 molecule, right? So this is about molecularity. So molecularity 1 means one molecule is colliding with the wall of container in order to form the products. Same way, when we are saying that the molecularity of the reaction is equal to 2, like for this reaction it is balanced reaction, we'll say that if it is a single step reaction, how we know it is a single? From experiment. So what experiment we do, we'll discuss that. So 2 times of HI, the coefficient of reactant is equal to molecularity, right? So here what is happening, that these two molecules which are identical, two HI molecules which are identical, they are going to collide. And because of their collision, there is formation of hydrogen molecule and there is formation of iodine molecule, right? So these two HI molecules are colliding with each other to form one molecule of hydrogen and one molecule of iodine. So since in collision two molecules are participating, it is known as bimolecular reaction, or its molecularity of the reaction is equal to 2. Same way when we are discussing termolecular reaction, here molecularity is equal to 3. So what does it mean? It means that two molecules of SO2, sorry, two molecules of SO2. So two molecules of SO2 is colliding together with one molecule of O2. So this collision is happening. Three molecules are participating in this collision. And because of this collision, there is formation of one molecule of, or two molecules of SO3. So two molecules of SO3 is going to form when two molecules of SO2 is colliding with one molecule of O2. So this is simultaneously three molecules are colliding, right? And reactions with molecularity 3 is very rare, or greater than 3 is very rare, right? So this is happening. So when we are saying molecularity, for single step reaction, molecularity is defined as the sum of stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced chemical reaction. So there is a logic when we are balancing the reaction, because when we are balancing the reaction in single step reaction, always balance the reaction in simple integral ratio. There is logic that it cannot possible that half or fraction of molecules can participate in collision. The complete molecule will participate, right? I cannot say I can balance this reaction, second reaction, as HI will form half H2 plus half I2, but there is no meaning of half H2 and half I2. Right here also I can balance SO2 plus half O2 will form SO3. But when we are balancing this reaction, in order to define molecularity, we should balance in such a way that the reactant and product stoichiometric coefficient should be simple integral, should be present in simple integral ratio. So that is the meaning. It is related to collision theory. That's why we are writing like that. So one molecule of PCl5. So we are writing here 1 will form one molecule of PCl3 and one molecule of Cl2. Here two molecules of HI are colliding to form one molecule of H2 and I2. So that's why simple integral ratio. Here two molecules of SO2 is colliding with one molecule to form two molecules of SO3. So that is the reason that while writing the
single step reaction in order to define molecularity, we should write in such a way that the reactant and product will bear a simple integral ratio. So now how do we know that this decomposition of PCl5 is a single step reaction, or decomposition of reaction between Hi on heating will form H2 plus I2. So from experiment, when we are doing experiment and we don't get a reaction intermediate, if there is no reaction intermediate, we'll say that it is a single step reaction. When the reaction, we are getting one reaction intermediate, then we'll say that, okay, it is a two-step process. When we are getting two reaction intermediate, we'll say it is a three-step process, right? So three-step reaction, two-step reaction, single-step reaction is based on the experimental observation of reaction intermediate. So here, this is potential energy versus reaction coordinate graph. This type of graph is very common in organic chemistry. And this type of graph is related to transition state theory. There are two theories. One is collision theory and the other is transition state theory. So in transition state theory, we discuss how the potential energies of the system is going to change when the molecules are coming together, coming nearer to each other. So the progress of reaction coordinate tell that initially reactant will be there, then activated complex will form, then product will form, right? So this is the diagram. Reaction coordinate will tell about the progress of the reaction, how the reaction is progressing. So now in this, we can see that here it is a single step reaction. This is the average energy of reactant molecule. Means there are certain molecules, reactant molecules, whose energy is greater than this value. There are certain whose energy is less. So all molecules which are going to collide is not going to form the product. So this is average energy, and this is activation energy of forward reaction. So what is the meaning of activation energy of forward according to transition state theory? It is the minimum energy which is added to average energy of reactant molecule so that there is formation of a transition state, right? So this energy, because you can see that I have made a circle over here. So this circle has many activated complexes, but the activated complex whose energy is maximum is known as transition state. If a molecule will achieve this state, definitely it is going to form product. So the molecule has to cross this energy in order to form the product. So there are chances that if the activated complex has energy from here to here, a lot of energy states are there. So if the activated state has energy less than transition state, it may possible it will revert back. But once it will reach to the highest point, it will convert into product. So this is activation energy of forward reaction. If the reaction is reversible, then we can say that this is average energy of product molecule, and this is activation energy of backward reaction. So when the reaction is taking place at constant volume and temperature, then this is the difference between average energy of reactant and product will give you change in internal energy. If the reaction is taking place at constant pressure and temperature, most of the time reaction is taking place at constant pressure and temperature. That's why the difference of energy of average energy of reactant and average energy of product will give you heat of reaction at constant pressure, that is delta H. So delta H of the reaction is equal to E average of product minus E average of reactant, or I can write in terms of activation energy, because you will get the same thing if I subtract activation energy of forward minus activation energy of backward. This difference we are going to get this difference. This difference is heat of reaction at constant pressure, which is delta H. If the reaction is taking place at constant volume, this difference will be delta U. So sometimes you will find in book delta U, sometimes this will be delta H. So you should clear about this. So this is for single step reaction, right? So in single step reaction, there is no reaction intermediate. There is one activated complex, we can say. So if you go through NCERT, right, oftenly we are using that term transition state and activated complex. We are changing their name, but basically there are so many activated complex from here to here, right? But only one activated complex with highest energy, that is known as transition state, right? So if a molecule will reach here, if transition state will achieve, then it will convert it into product. Before this maximum value, if it is here, it can come back. So this is important regarding that.
So for multi-step reactions, when we are defining that, for multi-step reactions, we are taking one example: 2 times of NO2 in gaseous state plus F2 in gaseous state will form 2 times of NO2F in gaseous state. This is overall reaction, right? From experiment, we got one reaction intermediate. Based on that, we are saying, okay, it is a two-step process. So when we are writing this mechanism, this is a theory, but this theory is based on experiment. And the experiment is that when we observe the reaction, we find one reaction intermediate, right? And based on that, we are saying it is a two-step process. So we are writing here, step 1 is NO2, one molecule will react with F2 molecules. So according to collision theory, 2 molecules are reacting. So we can say that molecularity of this step is equal to 2. Then this is not initially and finally also it is not there. ये बीच में बन रहा है, ये molecule पहले भी नहीं है और ये बाद में भी नहीं है. When I add these two reactions, these are reactants, right? 2 times of NO2 plus F2, these are reactants and this is product. तो ये बीच में बना और बीच में ही कंज्यूम हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट. और हमें केवल ये केमिकल स्पीसी मिला, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. सो बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट वी आर सेइंग दैट इट इज अ टू स्टेप process. So molecularity of this second step is also 2, because in collision theory we can say 2 molecules are colliding together, so molecularity will be 2. So for a multi-step reaction, when we are going to define molecularity, we'll say that for each, in mechanism we are saying that molecularity of each single step is defined, right? Each single step has molecularity, but there is no meaning of molecularity of overall reaction. क्या मतलब है इसका? ऐसा कभी रिएक्शन में हुआ ही नहीं कि 2 मॉलिक्यूल NO2 के और 1 मॉलिक्यूल F2 का आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है. बट मॉलिकुलरिटी इस स्टेप के लिए 2 है और इस स्टेप के लिए 2 है. ये सिंगल स्टेप है. सिंगल स्टेप में मॉलिकुलरिटी मींस sum of coefficient of reactants, right? So 1 plus 1 will be 2, 1 plus 1 will be 2. तो अब इसको हम जरा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ से स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट दिस इज द एनर्जी ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ. दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. अपने केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट है NO2F2. सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट. देन दिस इज द सेकेंड स्टेप. So this will be the final product. So you can see from this graph that this is the activation energy of the first step. ये पहला स्टेप है, ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप की है, और ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है. सो आई कैन से दैट सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. बिकॉज द स्टेप विच इज स्लो, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो, मोर स्लो विल बी द रिएक्शन, बिकॉज रेट कॉन्स्टेंट इज K is equal to A e to the power minus EA upon RT. तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट कम होगा, रेट कांस्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम होगी. तो मैं ये कह सकता हूं इस मैकेनिज्म डायग्राम को देख के कि सेकेंड स्टेप इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो द फर्स्ट पॉइंट इज EA2 is greater than 1, so the second step is rate determining step. Molecularity is defined for each single step I have discussed, but there is no meaning of molecularity of overall reaction. और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमें डिफाइन करना हो कि what is delta H of the reaction, ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है, तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की, और ये डिफरेंस है. प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, मींस दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. और कई बार ये एक्सोथर्मिक का डेल्टा U होगा व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इसको डेल्टा H लिखेंगे, राइट? ओके, सो मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. जब हम मॉलिकुलरिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, वी गॉट दैट मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज 1, 2 और 3. रिएक्शंस विथ मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आर वेरी रेयर. ये भी एक्सपेरिमेंटल है. हमें एक्सपेरिमेंट में ऐसी बहुत कम रिएक्शंस मिली हैं जिनकी मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो. इफ अ रिएक्शन इज बाइमॉलिकुलर, अगर मैं कह रहा हूं कि बाइमॉलिकुलर रिएक्शन, मतलब मैं कह रहा हूं मॉलिकुलरिटी 2 है, मैं मॉलिकुलरिटी डिफाइन कर पा रहा हूं रिएक्शन की, मतलब वो सिंगल स्टेप रिएक्शन. और सिंगल स्टेप रिएक्शंस में मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं. तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं इफ अ रिएक्शन इज बाइमॉलिकुलर देन इट्स ऑर्डर इज 2,
बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो ठीक है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, बट अगर वो मल्टीपल स्टेप है तो मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो बाई मॉलिकुलर मैं रिएक्शन को कह रहा हूं, मतलब सिंगल स्टेप कह रहा हूं, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी विल बी सेम। सो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन हैज अ ऑर्डर ऑफ 2 बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। फॉर अगर मैं कहता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कोई पूछेगा कि सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब मॉलिक्युलरिटी जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है। अगर लिखा है कि भाई ऑर्डर जो है हाफ है, फ्रैक्शन है, माइनस है, तो हमें पता है ये सारी चीजें मॉलिक्युलरिटी इनकी डिफाइन ही नहीं है, हाफ जीरो ये हो नहीं सकते, तो दे आर नॉट सिंगल स्टेप, दे आर मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। Order of same reaction may depend on experimental conditions under which the reaction is taking place. तो कई बार ऐसा होता है कि हम हर रिएक्शन के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रिएक्शंस में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर हम चेंज कर दें तो ऑर्डर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर हम HI मॉलिक्यूल्स को हीट करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यही रिएक्शन है, लेकिन इस कंडीशन में हमने कंडीशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर दी। अब ये HI गैस जो है वो गोल्ड मेटल, गोल्ड के सरफेस पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, गोल्ड इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, तो ये जाके वहां एब्जॉर्ब हुई और फिर रिएक्शन हो रहा है। तो वहां से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ऑर्डर इज जीरो। सो रिएक्शन तो सेम हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है, बट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पे ऑर्डर की वैल्यू बदल सकती है। लेट अस सॉल्व some one example based on what we have studied. So let me read the question first. Consider the following proposed mechanism. तो इस mechanism में मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, दो स्टेप दे रखे हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। A will form B plus C and A plus C will form B plus D। और यहाँ मेंशन है कि K1 की वैल्यू जो है वो K2 से ज्यादा है, तो K2 कम है, इसका मतलब एक्टिवेशन ये 2 ज्यादा है, मतलब ये RDS हुआ। इस डेटा से हमें पता चला कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो सेकेंड स्टेप है। फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दे हैव गिवन ओवरऑल रिएक्शन, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ C जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ A विल फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ D प्लस D। सो फॉर ओवरऑल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है बी इज रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में अगर हमें पता करना है तो पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके अलावा कुछ और है जो हमें इस मैकेनिज्म में दिखाई दे रहा है, जो पहले बनेगा और बाद में कंज्यूम हो जाएगा, तो वो होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे यहाँ इस रिएक्शन में सी है, सी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पहले था नहीं, बना और फिर बाद में कंज्यूम हो गया, तो दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो सी इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये गलत हो गया। कई बार वो पूछते हैं कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो कैटलिस्ट में क्या होगा कि कैटलिस्ट पहले भी होगा, राइट। पहले रिएक्शन में मतलब इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, इट इज नॉट कंज्यूम इन ओवरऑल रिएक्शन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लो A प्लस, सपोज यहाँ C होता, यहाँ पे C होता, राइट, और सेकेंड स्टेप में C राइट हैंड साइड में फॉर्म होता, तो C पहले कंज्यूम हुआ और बाद में बन गया, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में C कंज्यूम नहीं हुआ, सो वी कैन से दैट C इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि एक स्टेप में कंज्यूम होता है और दूसरे स्टेप में फॉर्म हो जाता है, तो ऐसे केमिकल स्पीसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट। और जो पहले में बनता है और बाद में कंज्यूम होता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। Now this C statement is important and some of the people will say that why you are teaching, right? This is given in old NCERT, पहले ये NCERT में था, steady state approximation method. So this is within our syllabus, so I have to discuss using steady state approximation method. Order of reaction is 1. So we are going to discuss what is the steady state approximation method. और फिर उसके बाद पूछा गया rate constant of the reaction is this. तो पहले स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या मानते हैं कि जो ये मैकेनिज्म लिखा गया है इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये माना जाता है कि जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई, क्योंकि इसमें पहला स्टेप फास्ट है, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई वैसे ये बन गया, और दूसरी स्लो है, तो इसका कंजम्पशन जो है वो स्लो हो रहा है, तो जब तक ये रिएक्शन चल रही है तब तक वो है और उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है।
तो स्टडी स्टेट में वी आर अज्यूमिंग दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट विल कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो अगर उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विल बी 0। तो हम यहां लिख रहे हैं कि हमारा सी जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इस सी के बारे में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सो व्हेन वी राइट दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं, सी जो है वो फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is equal to rate constant of first reaction into concentration of reactant। ये सिंगल स्टेप है तो मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर सेम हो गए। यहाँ पे C जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो मुझे अब नेट वैल्यू लिखनी है, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ C। नाउ ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट ये A और A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ C विल गेट, द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। ये C की वैल्यू आ गई K1 अपॉन K2। So now if I want to write that, if I have to define what is the order of the reaction by steady state approximation method, ये हमारा RDS है, ये RDS है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो इस स्टेप का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। अगर ये C इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता तो हम कह देते ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट C is reaction intermediate. So whenever C is reaction intermediate, we have to remove this reaction intermediate. तो अगर हम इसको रिमूव करें तो यहाँ से क्या आएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और C की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे K1 अपॉन K2। K2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी कैन राइट दैट K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। So obviously when we are discussing that what is the rate of this reaction, rate of this reaction is rate constant K1 into concentration of A to the power 1। So definitely it is a first order reaction। और इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। तो अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो यूजिंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, वी डोंट हैव टू टेक अप्रोक्सीमेशन हियर, बट इन सम केसेस if we write and after writing we got that key it is order we are not able to define, then we have to take approximation in order to define, in order to explain the order of the reaction। order बार बार आ रहा है इसलिए confusion हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन कई बार लेना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम्स लेना पड़ता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना पड़ा। क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि रेट लॉ इक्वेशन उस तरह से आ गई जिससे हम ऑर्डर को डिफाइन करें। सो सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको हमने लिखा, यहाँ से C की वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आ गई, और ये ऑर्डर हम इस फॉर्म में अगर रेट लॉ इक्वेशन हो तो ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर 1 है, राइट। सो फ्रॉम देयर वी गॉट दैट C इज करेक्ट एंड D विल बी रॉन्ग, बिकॉज अगर हम यहाँ से देखें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K आ रही, K1 आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेई मेंस और एडवांस में हमें जो ऑर्डर पढ़ना है वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर ही है, और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे गए हैं। फ्यू क्वेश्चंस छोड़ दिए जाए मेंस में जो जहां पे ऑर्डर जो है nth ऑर्डर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, एंड 95% इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। few questions we can ask from 0 order। तो we are starting from 0 order reaction। एक हमने एग्जांपल लिया है, और इन सारे एग्जांपल्स में हमारा जो कोफिशिएंट है रिएक्शन में वो एक ही है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। So when we are studying this reaction, we have to be very careful that what is the coefficient of reactant, how many reactants are there। So most of the time we are studying for only one reactant on the left hand side and its coefficient is 1। अगर ऐसा है और ये रिएक्शन बैलेंस है तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन कैपिटल A का हम स्मॉल a लिख सकते हैं, और किसी टाइम पे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, वेयर x इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अब कहूं कि क्वेश्चन में मेंशन है कि इट इज 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, देन आई कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate we are writing change in concentration of A with respect to time। this is in differentiation form, right। so that is equal to rate constant of the reaction concentration of A to the power 0। अब यहाँ पे change in concentration
right? If that this is big time interval, so x is there. If this is dt, then this is dx. So when we are writing that what is the change in concentration, right? So since it is reactant, अगर मैं यहाँ value put करूंगा तो ये होगा dt टाइम के लिए a minus dx. तो ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया और ये इनिशियल है. माइनस करूंगा तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस dx, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस. So this is very important in terms of extent of reaction. This is the rate. dx upon dt is equal to rate constant of the reaction. If I integrate this, I'm getting x is equal to kt. This is more useful. I can write this in this form also. अगर मैं यहाँ से लिखूं कि माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के रिएक्शन टेकिंग लाइक टर्म्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ए नॉट है, किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए टी होगा, यहाँ माइनस साइन है, अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो वी आर गेटिंग ए नॉट माइनस ए टू ए टी इज इक्वल टू के रिएक्शन इनटू टी. बेसिकली ये यही है, ए टी की वैल्यू है ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यही है ना. तो इसको दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है. सो हाफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ का मतलब होता है कि रिएक्टेंट पहले जितने थे, जब जिस टाइम पे उनका कंसंट्रेशन आधा हो गया तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ. सो हियर टाइम t is equal to t half, at is equal to a naught by 2, and from there we can say extent of reaction is equal to a naught by 2. अब अगर मैं ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू के टी, इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, ए नॉट बाई 2 रिएक्ट कर चुका है, और यहाँ टी हाफ लिख दूं तो टी हाफ की वैल्यू ऐसे आ गई. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट माइनस ए टी is equal to k reaction into time t. So here when you are putting at is equal to a naught by 2, then this is t half. From there you are getting that half life of a zero order reaction is equal to a naught upon 2 times of k reaction. Be careful कि ये k reaction है या k reactant है, you have to be very careful. So here it is k reaction. So t half is equal to a naught. Half life is directly proportional to initial concentration of the reactant in terms of zero order reaction. क्या मतलब हुआ इसका, अगर हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली जिसमें 100 मोल्स हैं या 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, तो क्या होगा कि 20 मिनट के बाद वो 50 हो जाएंगे. अब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, अब यहां से 50 से 25 होने में, क्योंकि ये जो हाफ लाइफ है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. सो इनिशियल कंसंट्रेशन नाउ बिकम्स 50, तो हाफ लाइफ वाला टाइम बदल गया, because it is taking place at a constant rate. This reaction is taking place at a constant rate. 100 से 50 होने में 20 मिनट्स लगे, मतलब 50 मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम. इट इज हैपनिंग विद अ कांस्टेंट रेट, मींस विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कंज्यूम. तो अगर मैं ये कहता हूं कि 50 मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम होने में 20 मिनट लगे, तो यहाँ तो 25 मॉलिक्यूल ही कंज्यूम हुए हैं, या है ना, रिएक्ट किए हैं, तो उसमें कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट. तभी तो मैं कह पाऊंगा कि रेट इज कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट. हियर अगेन 25 से उसका आधा होने में फिर क्या होगा, टाइम जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज होती जाएगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. In case of zero order reaction, half life is not fixed, it is going to decrease with time, right? So t half is directly proportional to a naught, or exactly t half is equal to a naught upon 2 times of k reaction. अगर कोई भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, 1 के बराबर नहीं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर 1 से कम है, वो सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं. जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, अगर ऑर्डर की वैल्यू हाफ है तो भी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी. विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम. बट यहाँ जीरो ऑर्डर में देख लो, अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये है और ए नॉट की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम को हम फुल टाइम कहेंगे. तो फुल टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 80 की वैल्यू 0, सॉरी, कि पूरा कंज्यूम हो गया 80 0, तो टी फुल की वैल्यू हो गई ए नॉट अपॉन के रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर की वैल्यू 1 से कम होती है वो सारी कंप्लीट होती है, दिस गोज टू कंप्लीशन. और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन. सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं. पहला ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का. सो फॉर इन ऑर्डर टू स्टडी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, और इक्वेशन हमें याद है, ए नॉट माइनस ए टी
A is 80 only, right? So is equal to K into time T. या मैं अगर A की बात करूं तो A की वैल्यू होगी A naught minus KT. So A naught is fixed at time T is equal to 0, whatever the concentration that is A naught. और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप नेगेटिव है. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू A naught and the slope of that is equal to minus times of K reaction. So it's a very simple for variation of concentration of A versus time for zero order reaction, it will be a straight line with negative slope. यहाँ extent of reaction versus time अभी हमने लिखा कि x is equal to kt. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ेगी और लीनियरली बढ़ेगी. इट इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी ना. x की वैल्यू जब मैक्सिमम a नॉट हो सकती है, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, तो वहां पे ये ग्राफ खत्म हो जाएगा. सेम वे इफ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द ए नॉट वर्सेस टी हाफ, अगर हमें ये जल्दी से रिलेशन लिखना है तो यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के टी और x की वैल्यू जब पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया मतलब ए नॉट के बराबर, राइट. सो ए नॉट एंड हाफ लाइफ, सो ए नॉट बाई 2 आएगा ना, आधा कंज्यूम हुआ. तो मैं यहां से लिख सकता हूं डायरेक्ट रिलेशन that is equal to A naught upon 2 times of K reaction. So अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे y एक्सिस पे हाफ लाइफ है और x एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, ओके. So this is y and this will be x. So it is a straight line passing from origin. The slope of this line is equal to 1 upon 2 times of K reaction. So these are very simple graph regarding to zero order reaction. Examples of zero order reaction, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following reaction is zero order. तो कई बार क्वेश्चंस में जब न्यूमेरिकल होता है तो दे विल गिव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड by the unit of rate constant of reaction we can find out what is the order of reaction. First we see unit of rate constant. अगर दे रखी है तो हमें पता है कि nth order reaction, अगर मैंने लिखा rate of reaction is equal to rate constant of reaction concentration to the power n. When we are defining rate is change in concentration upon time. So this is concentration upon time. Time can be in minute, second, hour, कुछ भी है ना. और ये अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो फ्रॉम देयर आई कैन राइट दैट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. For zero order reaction n is equal to 0, so I can say that concentration time inverse for zero order, first order में n की value 1, तो time inverse per minute per second means it is a first order reaction. If it is mole per liter per second, then it is a zero order reaction. So from the unit of rate constant, we can find out what is the order of reaction. और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कोई डेटा नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी, राइट. सो बेस्ड ऑन मेमोरी if they are asking then you can find out that decomposition of gas on surface of metal. अभी हमने डिस्कस किया HI गैस का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. या अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन किसी मेटल के सरफेस पे हो रहा है, टंगस्टन मेटल के सरफेस पे हो रहा है, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कोई भी यूनिट रेट कांस्टेंट की दे नहीं रखी है. दे विल आस्क अ क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द ऑप्शंस आर लाइक दैट. So photochemical reactions are generally example of zero order reaction. Enzyme catalyzed reactions are example of zero. तो ये memory based कुछ examples हैं for zero order reaction. Kinetics of first order reaction. So we are saying that this is a balanced reaction, only one reactant is there and coefficient of that reactant is equal to 1. तो अगर ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं rate of reaction is rate constant of reaction concentration of reactant raised to the power order इसका 1 है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि reaction is first order with respect to A. Now I can write that rate of reaction is minus d upon dt which is equal to K reaction concentration of A. और अगर हम like terms को एक तरफ ले आए और इसको solve करें तो we know that this is इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. सो सेम वे वी कैन से दैट व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज 3/4 लाइफ. हाफ लाइफ मींस आधी लाइफ कंप्लीट हो गई है, आधा कंज्यूम हो गया है, स्पेसी आधा कंज्यूम हो गया है. 3/4 मतलब 75% कंज्यूम हो गया है, राइट.
अगर मैंने यहाँ कई बार ऐसा लिखेंगे T.6 मतलब 60% कंज्यूम हो गया है, T.7 70% कंज्यूम हो गया है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा. So any fractional life is independent of initial concentration of reactant. First order में कोई भी fractional life हो, it is independent of initial concentration of reactant. So like using the formula, I am writing that K reaction relation between T half and T3/4, K reaction into T3/4 is equal to ln A naught. अगर शुरू में 100% थे, 75% कंज्यूम हो गए, तो कितने बचे? 25. So I can write like this 100/25. So from there I am getting ln 4 which is equal to 2 ln 2. जैसे अगर मुझे हाफ लाइफ और ये रिलेशन लिखना है, उसमें वैल्यू रखनी है KT is equal to ln A naught minus AT, तो मैंने लिखा K रिएक्शन T हाफ, आधा कंज्यूम हो गया है ना, तो लॉन इनिशियली अगर पहले 100 था, आधा कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा है? 50 बचा है. तो फ्रॉम देयर विल गेट ln 2 एंड वी कैन रिलेट हियर दैट for first order reaction 3/4 life is 2 times of half life, right? So for any these type of relation कि अगर हम ये कहते हैं कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई या 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसमें टाइम का रेशियो क्या होगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन यूज के रिएक्शन विल कैंसिल आउट. सो हियर लॉन पहले 100 था, 99.9% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना है? 0.1. यहाँ पे 99% कंज्यूम हो गया है, मतलब बचा कितना है? 1. So from there we can find out, right? ये इसको सिंप्लीफाई करें 10 to the power 3, इसको सिंप्लीफाई करें 10 to the power 2. So we can write that this value, this ratio is equal to 3/2, right? So very simple in first order reaction, we don't have to do anything. अगर 70% दे रखा है तो ऊपर 100 लिखो, नीचे 30% बच गया, 70% कंज्यूम हो गया, 30 we can simplify. So graph related to first order reaction, when we are discussing the graph, the first is when we are writing integrated rate law equation, we are writing that KT is equal to ln A naught upon AT, है ना. इसको और अगर हम simplify, AT is A, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि A naught upon A is equal to K into T, और सॉरी, A naught upon A is equal to E to the power, बेस यहाँ पे E है, E to the power K into T, और from there we can write that A is equal to A naught और AT is equal to A naught E to the power minus times of K reaction into time T. So this is exponential decrease with time. So initially at time T is equal to 0, इसका कुछ concentration है, वो concentration है A naught, initial concentration, and with time it is exponentially going to decrease. So this is the variation of concentration of A with time in first order reaction. Same way we can write this relation that ln A naught upon AT, AT is A, is equal to K into T. If I further simplify, I can write that ln A naught minus ln A is equal to K into T. So यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ कि what is the value of ln A, that is equal to ln A naught minus KT. If we simplify this, we can say that this is Y, this will be X. So it is a straight line with positive, it depends ki positive या negative intercept, it depends the value of A naught. So this is ln A naught value, this value is ln A naught, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है. स्लोप की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, सो द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. सो वैल्यू ऑफ स्लोप is minus k. This is a common error in chemistry or physics, you can say. Whenever they are asking graph, सबसे पहले आप ग्राफ में देखो बेस कौन सा है ना. पता नहीं आप लोगों को ये आदत कहाँ से पड़ी है, हमें नहीं मालूम, मैथ से पड़ी है क्या, क्योंकि मैथ्स में शायद कुछ मेंशन नहीं होता, तो कोई एक फिक्स चीज होती है. तो ये ध्यान रखना, अगर लॉन लिखा है तो बेस ई होगा, अगर ऐसा लॉग लिखा है तो बेस 10 है. Here the base is 10. When I am writing ln, the base is e. ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको आप मैथ से कंफ्यूज नहीं होना. यू हैव टू फॉलो दिस, राइट. बी केयरफुल, है ना. अभी कई लोग जो है बस देख लेते हैं ओके लॉग है ना, लॉन है या लॉग है, ये नहीं ध्यान देते हैं, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो आपसे जो पूछेगा वो आप गलत कर दोगे. ये बहुत कॉमन एरर है, बच्चे करते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है. Extent of reaction versus time graph.
देखते हैं इसको। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने अभी पढ़ा कि AT की जो वैल्यू है वो A0 e⁻⁻k रिएक्शन इनटू टाइम t है। AT क्या है? A0 - x कि अभी कितना बचा है, पहले कितना था, उसमें से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन माइनस कर दो, क्योंकि हमारी बैलेंस रिएक्शन थी, A विल फॉर्म प्रोडक्ट। So A0 - x is equal to A0 e⁻⁻k reaction into time t. So from here we can find that x is equal to extent of reaction is equal to A0. A0 कॉमन ले लेते हैं, e⁻⁻k reaction into time t. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम t is equal to 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 0, राइट। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 ग्राफ होगा, फिर ये ग्राफ बढ़ेगा और आपको बेटर तरीके से आता है, यू कैन हैंडल दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, extent of reaction versus time graph. And the last graph is also important because we are saying rate of reaction is equal to rate constant of reaction concentration of A to the power order is 1. Now we are discussing about rate of reaction versus time. Already we have discussed that AT is equal to A0 e⁻⁻k reaction into time t. So if I relate here, the left hand side is y and ये x है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया है। टाइम t is equal to 0, r की वैल्यू r0 के बराबर, which is equal to k into a0. तो टाइम t is equal to 0 पे ये वैल्यू है k into a0. And as you are increasing the time, it is rate of reaction is exponentially decreasing. So this is the graph regarding last graph, half-life versus A0. So in half-life, we have discussed that KT is equal to ln A0 upon AT. Now time t is equal to T half. This is equal to ln 2. So T half is equal to ln 2 divided by K. Rate constant of reaction is independent of concentration. तो ये एक तरह से constant हो गया. If we are not changing the temperature or we are not using catalyst, rate constant is not going to change. So half-life is fixed. So whatever the initial concentration is there for first order reaction, half-life is not going to change. So that is different from that of zero order reaction. Zero order में टाइम के साथ में हाफ लाइफ की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती थी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में वो रहे, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, हाफ लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज. In first order reaction, variation of concentration of reactant with equal time interval will form a GP whose common ratio is equal to e⁻⁻k reaction into time t. अगर मैं टाइम के साथ में ये प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ से, A0 टाइम t पे A0 e⁻⁻k reaction into time t and so on, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, दिस अपॉन दिस. So that value is equal to e⁻⁻k reaction into time t. Now this question is also very important for us. Average life in zero order and first order. So maths physics में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम एवरेज लाइफ को कैलकुलेट करते हैं. तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं. So we are saying that first for zero order reaction we are finding what is the half life, sorry, average life. So this is the reaction coefficient is 1 and we are writing this is a balanced reaction. Initially at time t is equal to 0, concentration is A0. किसी टाइम पे हमने ये concentration ऐसा लिखा. Suppose at time t dx amount of reactant is consumed. डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट अमाउंट कंज्यूम हो रहा है. अभी हमने माना कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ अमाउंट कम हो गया, दैट अमाउंट इज dx अमाउंट. सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज लाइफ का मतलब कि सबकी लाइफ को ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दो. यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस इनिशियल कंसंट्रेशन. सबकी लाइफ कैसे निकालें, टाइम टी पे हमने कितने पार्टिकल्स कंज्यूम हुए वो लिखा, dx पार्टिकल. तो dx पार्टिकल की लाइफ t है और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, तो टाइम इंटरवल जो वेरी करेगा वो जीरो से फुल टाइम की वैल्यू हम x इज इक्वल टू kt से कैलकुलेट करेंगे. दिस इज फुल टाइम. So I am writing that this is the number of particles consumed, or we can say these are the particles, number of particles having life t, and now we are integrating from 0 to t full. ये सारे particles की life इस range में lie करेगी. And now if we simplify this, we know that dx is equal to k reaction into dt.
और यहाँ टाइम टी हो गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन राइट दैट के रिएक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी इज टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिमिट है 0 to t final, and if we put the value we are getting that average life is equal to a naught upon 2 times of k reaction, which is equal to half life. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एवरेज लाइफ जो है वो हाफ लाइफ के बराबर है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इफ वी कैलकुलेट दैट what is the average life of first order reaction, so same way initially only one reactant is there, coefficient is 1, ये हमने लिख लिया. assume same assumption है कि टाइम t पे dx मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंज्यूम हो गए, तो dx मॉलिक्यूल की ये जो जो लाइफ है वो t है. सो वी आर राइटिंग एवरेज मीन्स सबके एनर्जी को, सबके लाइफ को ऐड करना है, तो हमारे पास dx मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी t है. बट फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. अगर हम लिखते हैं यहाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म, के रिएक्शन इनटू टाइम t इज इक्वल टू ln k नॉट अपॉन at. अगर at की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ टाइम इंफिनिटी लगेगा, राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 0 to infinity. We have discussed that if order is greater than equal to 1, reaction never goes to completion. तो अगर यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं, अब dx अपॉन dt फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं मैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर इज 1. तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो dx की वैल्यू होगी k इंटू ए इंटू डी टी. सो k a dt, और ये टाइम है, राइट. सो इफ आई सिंप्लीफाई k and k is outside, a is a naught e to the power, so if a naught and a naught will cancel out, so I can write that k e to the power minus k reaction into time t into dt. अगर ये इंटीग्रेशन है, फॉर दिस इंटीग्रेशन इफ यू यूज दिस फॉर्मूला वेयर x to the power n e to the power minus ax dx, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन a अपॉन n प्लस 1. यहाँ a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो k रिएक्शन है, और n की वैल्यू कंपेयर करूं तो यहाँ n की वैल्यू 1 है. तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं 1 फैक्टोरियल इज 1, और a का मतलब है k रिएक्शन, तो k रिएक्शन 1 प्लस 1 मीन्स k स्क्वायर, 1 अपॉन k स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन आ रहा है 1 अपॉन k स्क्वायर, राइट. और ये पहले से ही एक k है, तो k वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग दैट एवरेज लाइफ इज 1 अपॉन k रिएक्शन. एंड इफ आई write what is the value of k reaction in terms of half life, we know that k reaction into half life is ln 2. So k 1 upon k reaction, if I am writing 1 upon k reaction is equal to half life divided by ln 2. Ln 2 if I simplify 1 upon ln 2 is 1.44. So average life is bigger than half life. Average life is 1.44 times of half life. So this is common in radioactivity also. Physics में आप पढ़ते हो इसको. So this is also important. For zero order reaction, average life is equal to half life. For first order reaction, average life is 1.44 times of half life. When coefficient of reactant is not equal to 1, ये जेई एडवांस और मेंस दोनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और ये 2-3 साल पहले से ही पूछ रहे हैं. Most of the time when they are asking in JEE mains and advance, they are taking the coefficient of the reactant is equal to 1. Now they have changed. They are taking the coefficient as different from 1, right? So I have taken here the coefficient is equal to 2. So if I simplify this, at time t is equal to 0, concentration is A. At any time t, we can write A minus 2 times of x is equal to x. Rate of reaction is equal to rate constant of reaction. Concentration of A to the power 0. Zero order reaction के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे rate of reaction means change in concentration of A divided by stoichiometric coefficient, which is equal to rate constant of reaction. So if I simplify this, अभी देखो A का change in concentration क्या हुआ, फाइनल concentration ये है, अगर यहाँ dt होगा तो यहाँ dx आएगा, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. फाइनल माइनस इनिशियल में a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा हुआ है, राइट. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx, और 2 डिनोमिनेटर में ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इज k रिएक्शन वही आ रहा है, राइट. और इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू k रिएक्शन इनटू टाइम t. तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है. दिस इज द सेम व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड व्हेन कोएफिशिएंट इज 1, बट बी केयरफुल दैट व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, क्योंकि हमने रट लिया है ये
कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ की वैल्यू जो होती है वो हाफ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो ज्यादा रटा हुआ है, ln 2 अपॉन के रिएक्शन, वो हमेशा सही नहीं है। वो तब सही है जब कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो यही डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अभी ये फॉर्मूला सेम है, राइट। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ ए विल फॉर्म बी। इनिशियली ए था, अभी मैं लिख रहा हूं a माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो हाफ लाइफ में आधा कंज्यूम हो गया कैपिटल ए, तो आधा बचा, मीन्स इट इज लेफ्ट a by 2. So if I calculate what is the value of 2x, the value of 2x is equal to a by 2. So the value of x is equal to a by 4. This is the difference when we are calculating what is the value of half life from here in this formula. We can put that okay, x is equal to a by 4. It is not, पहले जब ये वैल्यू थी dx dt ही लिखते थे, लेकिन जब यहाँ कोफिशिएंट 1 था तो a माइनस एक्स लिखते थे, तो वहां से x की वैल्यू हाफ लाइफ पे a by 2 आती थी, अभी आ रही है a by 4। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, a by 4। तो ये आदत आपको ध्यान में रखना है। अभी जेई मेंस और एडवांस में 1-2 सालों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको कोफिशिएंट, आपको बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है। सेम वे अगर आप एक्सटेंड की जगह इससे सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट हियर, राइट। सो माइनस डी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई 2 इज के रिएक्शन। फर्दर सिंप्लीफाइड, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले गए, इंटीग्रेट किया, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द कंसंट्रेशन इज ए नॉट, एट टाइम टी कंसंट्रेशन इज ए टी। So on simplification we are getting that a naught minus at is 2 times of k reaction. ये 2 times of k reaction है, राइट। इसको मैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है, तो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाई 2 रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और रेट कांस्टेंट का आज हमने डेरिवेशन किया, उसमें क्या रिलेशन निकला, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 रेट कांस्टेंट ऑफ बी। तो ये 2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज के ए। तो कई बार वो रिएक्टेंट का नाम देंगे कि रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, then this 2 will not come because 2 times of k reaction is nothing but it is ka into time t. So be careful in language that what they are using. अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में नाम है कि डिकम्पोजिशन कांस्टेंट ऑफ ए है तो कोफिशिएंट नहीं आएगा, लेकिन अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। दिस इज अबाउट जीरो ऑर्डर, ऐसा ही अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिख रहे हैं। सो व्हेन वी आर राइटिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज अगेन माइनस डी अपॉन डी टी इज 2 टाइम्स ऑफ के रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ के रिएक्शन है, इसी को मैं के ए भी लिख सकता हूं। के लिखूंगा तो फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, राइट। बट अगर 2 टाइम्स ऑफ के रिएक्शन के टर्म्स में लिखूंगा तो कोफिशिएंट विल कम हियर, एंड we have an habit of writing in terms of k reaction. So from there if you calculate what is half life, तो half life ये तो ln 2 ही होगा, बट ये 2 वाला नीचे फैक्टर आएगा ना, तो ln 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k रिएक्शन आया, ठीक है, विच इज ln 2 अपॉन ka, राइट। So I expect that you will not do error. Either you solve the same thing by extent of reaction, you are going to get the same relation, right? So be careful about that. This is about कोफिशिएंट। ये अभी जेई एडवांस में 2019 पेपर 2 में आया क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इसके बाद जेई मेंस में क्वेश्चन बहुत सारे आए इसी पे बेस्ड, राइट। तो लेट मी डिस्कस हियर the decomposition reaction 2 times of N2O5 in gaseous state will form 2 times of N2O4 plus O2 is started in a closed cylinder under isothermal isochoric condition। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट, एंड इनिशियल प्रेशर इज गिवन। So when volume is constant, temperature is constant, pressure is directly proportional to number of moles, I can say. After y into 10 to the power 3 seconds, the pressure inside the cylinder was found to be 1.45 atm. If the rate constant है ना, ध्यान से पढ़ना है हमें, यहाँ हम गलती करते हैं, इन्होंने लिखा है rate constant of reaction, मुझे कलर चेंज करना चाहिए। Rate constant of reaction is 5 into 10 to the power minus 4 per second, assuming ideal gas behavior. What is the value of y? तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड व्हेन वी आर राइटिंग इंटीग्रेटेड
coefficient, because rate constant of reaction is given, so we should write 2 times of K reaction into time T is equal to ln A naught की जगह P naught, initial pressure, and pressure of N2O5 at time T, that is PT. So if I want to write here, I can write that this is equal to P naught and this is equal to P naught minus 2x. Because when we are writing here, initial pressure is P naught. At any time T, if I write that what is the pressure, so I should write here, मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि pressure should be P naught. Just a minute. Pressure should be P naught minus 2 times of x. This value will be 2 times of x and this value will be x. So they are saying initial pressure was 1 atm. So P naught is 1 and total pressure अगर मैं लिखता हूँ whatever the time they have given. So P total, if I am writing that P total is equal to 1.45, which is equal to P naught. If I add this, that will be x, P naught plus x, which is equal to 1.45. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, that is equal to 0.45 because P naught is equal to 1, and from there अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ rate constant of reaction they have given, if the rate constant, so I'm writing here that 2 times of rate constant of reaction is 5 into 10 to the power minus 4 into time T. So they are asking that under isothermal condition, initial pressure is this. After this much time, okay, I have to calculate. So I have to write y into 10 to the power 3. This is the time is equal to ln. Initial pressure was 1 and now the pressure is 1 minus 0.9. So this is ln 10 and ln 10 we know that is equal to 2.3. 2.3. So left hand side को अगर मैं simplify करूँ 10, so 10 to the power minus 3. So if I simplify this, y is equal to 2.3. So this is the answer, y is equal to 2.3. तो अभी इसके पूछने के बाद मेंस में भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं. So we should not do mistake. We should be very careful while reading the question. Kinetics of nth order reaction. So we have taken a reaction in which this reaction is balanced. One reactant is there, coefficient is 1. So first we calculate for coefficient 1, minus dA upon dt is equal to K reaction A to the power n. And if we take like terms on same side, so minus dA upon A to the power n is equal to K reaction into dt at time t is equal to 0, concentration is A naught, at time t concentration is AT. अगर हम इसको integrate करें, so after integration this, अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये A की पावर माइनस n है. सो इंटीग्रेशन में माइनस n प्लस 1 आएगा, राइट. माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी आर गेटिंग दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन AT टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू K रिएक्शन इनटू टाइम t. अगर कोफिशिएंट 1 से डिफरेंट है, कोफिशिएंट अगर m है तो यहाँ पे m आ जाएगा. अब हमें हैबिट है, राइट. सो अगर ये 1 है तो 1, अगर m है तो यहाँ m कोफिशिएंट आ जाएगा. So if I calculate that what is the half life for any nth order reaction where n is not equal to 1, क्योंकि अगर n is equal to 1 then method of integration will change. So when we are discussing half life we are getting that half life is directly proportional to 1 upon A naught to the power n minus 1. And same way 3/4 life अगर हम calculate करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो ये वैल्यू आ रही है. तो from there we can write that T3/4 divided by T half is equal to 2 to the power n minus 1 plus 1, right. तो हमने ये जो डेरिवेशन किया है इसमें, ये डेरिवेशन तब किया है जब n is not equal to 1, but we are lucky that this formula is valid for n is equal to 1 also. For any reaction, if we have to find out what is the relation between 3/4 life and half life, we can use this formula. This is very useful formula. So like for zero order reaction, if I am writing n की value यहाँ 0 रखो तो 1/2 plus 1 is 3/2, ratio is 3/2. For first order reaction we have calculated n1, so 2, right. Second order reaction also you can write. So it's valid for all order reaction orders, right. Even n is equal to 1 पे भी ये valid है, we are lucky there. For zero order reaction, T3/4 upon T half is equal to, we have discussed this. Why this reaction is important? Because in JEE mains they have asked question based on
order 2 or they have asked question based on order half. जैसे अगर मुझे integrated rate law equation लिखनी है और order इसका half है, for half order I will do, I will put a value over here. तो अगर ये half होगा तो half minus 1 is minus half, तो ये ऊपर चला जाएगा. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि n की वैल्यू जो है वो half है और हमें ये इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखनी है, तो वी कैन राइट इजीली हियर, हाफ रख दो यहाँ पे, तो ये माइनस हाफ है, 2 ऊपर चला गया. सो आई एम राइटिंग हियर 2 इज देयर, और माइनस साइन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अंदर ले जाऊं, तो इट इज ए नॉट, राइट, ए नॉट टू द पावर हाफ माइनस 80 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू के रिएक्शन इनटू टाइम टी. और यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, अभी यहाँ पे 80 की वैल्यू 0 हो सकती है. Since order is less than 1, reaction goes to completion. So this is very useful for us, right? और बहुत सारे जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जहां पे हाफ लाइफ इज directly proportional to 1 upon a naught to the power n minus 1. With the help of that, we'll find that what is the order of the reaction. By using this t half a naught to the power n minus 1, we can calculate the order of reaction, right? So this is important for mains as well as advance. फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. इस वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि आजकल जेई मेंस और एडवांस में कौन सी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनका ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू.